Hello students, very good morning. This is our computer class. In last class we have started lesson number 1, that is organizing information in documents. And in last video we have studied how to create a table on Microsoft Word. There are 3 ways to create a table. Now, entering text in a table. How can we enter text? How can we write words or letters or numbers in a table? You can enter text into a table by clicking the cell and then typing in it. Press the tab key to move to the next cell and type the data again. Now, first we have drawn the table. There are 3 methods to draw the table. We can directly insert table like this, or we can write manually the rows and columns, or we can draw. After drawing the table on the working area of the document, we can enter the text. So to entering the text, we have to click on the cell. This is the single cell. It is known as the cell, and we have to put the pointer on the cell and just click. The keys that can be used to move from one cell to another in a table in a Word document have been listed in table 1.1. Now in this table there are some keys, there are some shortcuts. Short keys are there to enter the text in the cell or to move the cells. First is the tab. Tab button is used to allow moving from cell to cell in a table in the left to right direction. Now if our pointer is here and if we want to move further, we just have to click on the tab button on the keyboard. Keyboard के ऊपर tab button होता है on the left side. So we just have to click on the tab and the cell goes forward. Shift plus tab allows moving from cell to cell in a table in the right to left direction. Now if you are pressing shift plus tab, it allows us to move from cell to cell, from right to left direction. Next is Alt plus page up. Alt plus page up, it user takes you to the beginning of the column in a table. अगर हमें टेबल के फर्स्ट पे जाना है, अगर हमारा कर्सर यहाँ पर है और अगर हमें फर्स्ट पे जाना है तो हम क्या करेंगे? Alt प्लस पेज अप. ये 2 बटन्स को जब हम प्रेस करते हैं, वी रीच टू द beginning of the column. Alt plus shift plus page up allows to select from the beginning of a column to the current place in a table. Alt plus page down allows to go to the end of the column in a table. Alt plus shift plus page down allows to select from the current place to the end of a column in a table. Alt plus home takes you to the beginning of a row in a table. Alt plus shift plus home allows to select from the beginning of a row to the current place in a table. Alt plus end takes you to the end of a row in a table. Alt plus shift plus end allows to select from the current place to the end of a row. So these are some shortcuts so that अगर हमने टेबल बनाया है डॉक्यूमेंट पर और अगर हमें उसमें चेंजेस करने हैं, जैसे हमें इस रो से यहाँ पर जाना है या फिर लास्ट पॉइंटर्स लास्ट सेल से हमें स्टार्टिंग में जाना है, फर्स्ट रो पे जाना है या सेकंड कॉलम पे जाना है, तो हम इन कीज़ का यूज़ कर सकते हैं. वी कैन यूज़ दिस कीज़ डायरेक्टली. वी कैन रीच अप टू द given words. So you just have to go through it. Now next is moving and resizing a table.
मूविंग एंड रीसाइजिंग मीन्स अगर टेबल्स में हमें चेंजेस करने हैं, चेंजेस मतलब जैसे अब ये टेबल स्क्रीन के लेफ्ट साइड में है और अगर हमें इसे राइट में लाना है तो हम इसे कैसे ला सकते हैं? यू कैन मूव एंड रीसाइज टेबल्स इन अ डॉक्यूमेंट. व्हेन द माउस पॉइंटर इज प्लेस्ड ओवर द टेबल, two handles appear. See here, like this, two handles appear when we place the pointer on the table. To move the table, click and drag the handle on the upper left corner of the table. Release the mouse button when the table is dragged to the desired location. तो जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये दो ऑप्शंस आते हैं. अगर हमें मूव करना है, इस टेबल को हमें दूसरे लोकेशन पे अगर शिफ्ट करना है तो हम उसे पॉइंटर के साथ वहाँ पर ले जा सकते हैं और पॉइंटर हमें छोड़ देना है तो वो टेबल वहाँ पर शिफ्ट हो जाता है. टू रीसाइज द टेबल, क्लिक एंड ड्रैग द हैंडल ऑन द लोअर राइट कॉर्नर ऑफ द टेबल. रिलीज द माउस बटन व्हेन द टेबल इज रीसाइज. और अगर हमें टेबल की साइज़ कम ज़्यादा करनी है तो भी हम कर सकते हैं. जैसे इसे ड्रैग करना है, यहाँ पर आपको ये पॉइंटर को ड्रैग करना है. अगर हमें इस टेबल को स्मॉल करना है, जैसे ये अंदर की तरफ लेना है तो इसे हम कम कर सकते हैं, कॉलम्स की साइज़ कम कर सकते हैं और इतने साइज़ में हम 5 कॉलम्स बना सकते हैं. सो दिस इज़ द मूविंग एंड रीसाइजिंग हैंडल्स. यू कैन सिलेक्ट द एंटायर टेबल बाय क्लिकिंग द मूव हैंडल. क्लिक मूव हैंडल टू सिलेक्ट द टेबल. और पूरे टेबल्स में भी हम चेंजेस कर सकते हैं जस्ट ऑन क्लिकिंग ऑन मूव बटन. नेक्स्ट इज कन्वर्टिंग टेक्स्ट टू टेबल. नाउ हाउ टू कन्वर्ट टेक्स्ट इनटू अ टेबल. टू कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल फॉलो these steps. These are the steps to convert text into a table like this. Select the text you want to convert to table. Now next step is on the insert tab in the tables group, click the table drop down arrow. Earlier also, see here in the insert table option, here insert table, the drop down box comes here and we have to enter the rows and columns manually. And for converting text to table we have to use that box only. See here, from the drop down list select convert text to table option. A convert text table dialog box appears like this. It appears and we have to choose one of the options in the separate text at sections. Here is the separate text at, so whichever we have to make the columns or rows we can select in these areas. Now click OK. The text appears in a table. अगर हमने ये सारे वर्ड्स वर्ड डॉक्यूमेंट में कॉमा करके लिखे हैं तो हमें यहाँ पर कॉमा करना है. तो कॉमा जैसे ही हम क्लिक करते हैं और ओके दबाते हैं तो ये सारे वर्ड्स टेबल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. नाउ सिलेक्टिंग अ रो और अ कॉलम. अब टेबल रेडी होने के बाद हमें अगर एंटायर रो और कॉलम सिलेक्ट करना है तो हम क्या कर सकते हैं. See, to select an entire column, bring the mouse pointer to the top of the particular column in the table. An arrow will appear. This arrow is known as the row or column selection bar. Click the arrow to select the entire column. Similarly, click the row selection bar to select the entire row. Adjacent cells can be selected by clicking and dragging the left mouse button through them. अगर हमें select करना है तो what we have to do? We have to take the pointer to the column or row. Whichever column or row we want to select, we can point on the selected area and the whole column and whole row will be selected. Now adding a new row. To add a new row, follow these steps.
If our table is completed and again we have to make a changes, like we have to add a row, new row. Suppose these are 1, 2, 3, 4, 5 and we have to add the row in between 2 and 3. So what we have to do? See, place the cursor anywhere in the table. The layout tab appears is under the table tools on the ribbon. This is the ribbon area and we have to click on the layout tab. See here, page layout. This is the page layout and in that table tools option will be there. We have to click on the table tools. On the layout tab in the rows and columns group, click the insert above option to add a row above an existing row, or insert below option to add a row below an existing row. So wherever we have to adjust, wherever we have to add the row, we have to keep the pointer here and we have to click on the insert above or insert below option so that the row can be added. Similarly, for adding a new column. To add a new column, follow these steps. Place the cursor anywhere in the table. Then place the cursor anywhere in the table. The table tools tabs appear like this. Under the table tools, on the layout tab in the rows and columns group, click the insert right. Insert right option to add a column to the right, or the insert left option to add a column to the left. If you want to add to the left or to the right, we can click on these options, insert left or insert right or insert below. Insert left or insert right. Only these options we can select for adding a new column. Now next is deleting a row or column. To delete a row or column from a table, follow these steps. Select a row or column to be deleted in the table. The table tools tabs appear. Under the table tools, on layout tab, in the rows and columns group, click the delete button. There is a delete button where we can delete the entire row or entire column. First we have to select the entire row or column, whichever we want to delete, so that the whole row or column can be deleted by this option. So you revise up to here.